Hello my friends, welcome. In last class we have discussed about CSMA and little bit about the CD. So from there we are going to continue, and then we are going to see some comparison and some questions asked in examination, like this question gate asked in 2015. So like this few questions we are going to see, like this question in ISRO. So let's just read the theory, then we are going to see the MCQs. So now this is one more important question. Can we frame here? Like when need to sense the channel before starting the sending the frame. One, by using the precedent process, in which we have discussed about 1P, NP, and PP. And transmission and collision detection is a continuous process. We do not send the entire frame. हम एक frame नहीं भेजते, bit by bit goes. So by sending a jamming signal, we can enforce the collision in other station who have not sensed the collision. So we can send a jamming signal. Okay. Now the examiner can ask a question where we can send the jamming signal in which. So the answer will be in CSMA CD. We can set the jamming signal. Okay, so whenever there is a collision attached, detect, then the station can send a jamming signal, and all other stations will know about this. Now, one more question examiner can be asked, like what is the length of the jamming signal in general? So in general, it is of the 32 bit. We are having the jamming signal in general. Okay, so like this, wherever there is a collision, so the station can send a jamming signal so that other station will also know about it. So this is about only one line is answer important for the regarding the jam signal. Okay. And this graph we have discussed. So here, let's suppose I station want to transmit a message. So initially, we will use 1P, non-P, or a P present then method. Then it will check that is there any collision detection or not. If it is no, then it is going to transmit the data. Then it will check other next time is the collision or not. If it is no, then again it is going to send. So like this, bit by bit, he is going to transmit. Once the collision is detected here, now it will send a jamming signal. Now it will increase the k value. Now here he can use any random number between 0 to 2 raised to power k minus 1. Then he is going to wait for this time. Then again he is going to restart this process. So this can improve the efficiency, and it can remove, or it can, you can say, minimize the possibility of more collision. So this graph is only for theoretical purpose. So usually examiner don't ask question from this graph. Then we are having the CSMA CA. Full form is important. Carrier sense multiple access with collision avoidance. So this is used on a wireless network. जैसे आपका जो होता है Wi-Fi, so it used in wireless network. So we are having the three strategy here: interframe space, contingent window, and acknowledgement. So three things are we are having. First, we are having the interframe space. When an ideal channel is found, the station does not send immediately. जैसे आपको एक ideal मिलता है, it means no one is transmitting any data. So you are going to wait for some time. So that time is known as interframe space, or IFS. So one mark question can be asked in examination from this slide. Even though the channel may appear idle, but it is since a distance station may have already started the transmission. So in this, what is the interframe space? So it is that a time period that you, when you find a channel idle, you are going to wait. Still, if it is no one is going to send, then you are going to transmit your data on your CSMA CA. It used in Wi-Fi in wireless media. Then we are having the contention window. The contention window is the amount of time divided into slots. So here we are using here slots.
A station that is ready to send a choose a number. So we have seen the graph here. So it is going to pick a number. So like any number he can pick, then it is going to increase it. The station send the sense after each time of slot. Okay. So however, if the station find that channel busy, it does not restart the process. It just stop the timer and restart it. Again, it is going to sense it. Then we are having the acknowledgement. When all these precaution, there still may be a collision resulting in the destroyed data. So the data may be corrupted during the transmission. The positive acknowledgement and the timer can help guarantee the receiver the received the frame. So how would you know that your data is being transmitted? So when you receive a acknowledgement, जब आपको acknowledgement मिल गया है. In layman language, if I say that आपने किसी को हाई भेजा, आपका कोई दोस्त है, उसको आपने हाई भेजा. Now how would you know that उसको डेटा मिला है नहीं मिला? तो in your व्हाट्सएप व्हाट्सएप में एक टिक आता है, फिर अपने पास में एक और टिक आता है, इसका मतलब डेटा हैज बीन, एक आता है सिंगल टिक, ये हो गया सेंट. देन वी गॉट वन मोर टिक, इट मींस दैट डेटा हैज बीन रिसीव्ड. एक होता है सेंट, हो सकता है कि कोई एरर आ जाए, या ये भी वैसे नहीं आता, ये भी आपका लोडिंग लोडिंग आता रहता है सम टाइम. So when we get the acknowledgement, so we get assured that yes, our data is being sent. So again, this image is very important. So from here, examiner can ask any question. So wherever if you are making any notes, so you can write this out. We are having three protocol: random access protocol, control access protocol, and our channelized protocol. In random access protocol, we are having Aloha, CSMA, CSMA CA, CSMA CD. So examiner, what examiner can ask question? He can ask which of the following is not a part of random access protocol. मतलब ये तीन ऑप्शन दे देगा आपको, और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि ये वाला उठा के आपको दे दे. So he can ask you what is the odd one out. ठीक है, which is the odd one out. Like this he can frame any question, or inside it he can ask the question from inside part also. So we have to cover everything. जो जो चीजें हैं अपन को यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी. Now we are having the control access protocol, and we are having the channelized protocol. So what is the working of the Aloha and slotted Aloha? अलोहा यार लास्ट क्लास में हो चुका था. So, तो अलोहा के अंदर अपना दो रहता है, एक होता है प्योर अलोहा, एक होता है स्लॉटेड अलोहा. तो अलोहा आपका बहुत पुराना आया था, उसमें एफिशिएंसी अपनी थी कम थी. और फिर हम स्लॉटेड अलोहा लेके आए. वी गेव स्पेसिफिक टाइम ऑफ स्लॉट्स. तो जैसे एक स्लॉट बना दिया आपने, थ्री थ्री सेकंड का कोई स्लॉट बना दिया, फिर आपने एक और स्लॉट बना 3 सेकंड का. इफ समवन वांट टू सेंड द डेटा, सो ही विल सेंड द डेटा इन दिस स्लॉट ओनली. इस दूसरे स्लॉट इन स्लॉट के बीच में सेंड नहीं करेगा. लाइक यू आर हैविंग द मेट्रो. ठीक है. सो इन मेट्रो देर इज अ टाइम स्पेसिफाइड कि भैया ये कोई स्टेशन है, यहाँ पे कोई मेट्रो आएगी. तो मेट्रो विल कम एट 9 AM. फिर जो नेक्स्ट मेट्रो है वो आपकी आएगी 9:15 AM पे. फिर जो नेक्स्ट मेट्रो है सेम स्टेशन पे फिर आएगी 9:30 AM पे. सो लाइक दिस वी हैव divided the slots of n time, and whoever want to send the data by using the shared medium, he can transmit the data only in that slot. उस slot के बाहर वो data transmit नहीं करेगा. So in pure Aloha efficiency आपकी थी कम थी. In slotted Aloha efficiency become twice of the pure Aloha. So आपकी जो efficiency थी वो शायद 1.8 से 3.6 हो गई थी. सो एफिशिएंसी इसमें ज्यादा हो गई थी. बस इतना ही आपको याद रखना है, जिसमें ज्यादा नहीं घुसना है. तो इफ यू वॉच द लास्ट क्लास, उसमें थोड़ा और आइडिया लग जाएगा. Then we are having the control access. In our control access, the station consult one another to find out the station to send. Here we are having the control over here.
अब जो अपना रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल था, इसमें जिसका मन किया, whoever having the data he can transmit the data. We don't have any control over here, we don't have any control. Like CSMA CA we are using here Wi-Fi. So in your, let's suppose you are having a router. In your router there are 10 devices which are connected to your router. So you don't have any control over here. But when we are using the control access protocol, we are having the control, and we can say that who is going to transmit the data. So then we are having the control access protocol. In this, a station consult one another to find which station has the right to send. जिसके पास राइट होगा सिर्फ वही डेटा को ट्रांसमिट करेगा. A station cannot send unless it is been authorized by other stations. So we are having the three methods here which are popular. Reservation. So it is similar to when you go to a hotel or restaurant. So we do the reservation. Then we are having the polling. Then we are having the token pass. So whoever having the token, he is going to transmit. So like this we can use. So three, from the name itself you can understand. First is reservation. So in this, whoever want to send a data, first he need to reserve. Then he is going to transmit the data in the slot, whichever slot he got. तो जब स्लॉट मिलेगा, जो आपको इंटरवल मिलेगा, उसी में आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसमिट द डेटा. Then we are having the method, polling method, in which here one device is designated as the primary station and other devices designation as the secondary stations. ठीक है. ऑल डेटा एक्सचेंज मस्ट मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस. तो जो प्राइमरी डिवाइस है, सारा के सारा डेटा उसके थ्रू होके ही जाएगा. सो द प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल्स लिंक. सो ये इस लिंक को कौन मैनेज कर रहा है? द प्राइमरी डिवाइस. सेकेंडरी डिवाइस फॉलोज इट्स इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन जो प्राइमरी डिवाइस देगा उसको वो फॉलो करेगा. If a primary wants to receive a data, he asks the secondary if they have anything to send. This is called poll function. So let's suppose this is my device, this is my A and B. So he will ask to A, hey, do you want to send the data? He will say no. Then he will ask B, hey, do you want to send the data? If he won't, then he will say yes, and he will transmit the data. So like this. So this function is known as, this method is phenomena known as poll function. If the primary wants to send the data, he'll tell the secondary device to get ready to receive the data. ठीक है. And this phenomena is known as select function. तो ये दो फंक्शन होते हैं, एक होता है पोल, एक होता है सेलेक्ट. So in depth, if examiner want to ask question, he can ask one mark small MCQ question, what is poll function in polling method, or what is poll function, like this he can ask. So ये दो क्वेश्चन, आप यहाँ से आपके तीन क्वेश्चन बन सकते हैं. फर्स्ट, what is the meaning of polling? So we can say in control access we are using the polling, in that we are having the two method, poll function and our select function. What happen in poll function, in which we are going to ask, and in select we are going to say that you are going to receive a data, so get ready. Then we are having the token pass. So like this, in a ring you can take the example. So this is very easy peasy. So here whoever having that a token, he is going to transmit the data, and the token is going to pass to another device. That's it. फिर होता है अपना चैनलाइजेशन. इसमें बस नाम याद आपको है करना. एफडीएमए, उनकी फुल फॉर्म भी, एफडीएमए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, and CDMA code division multiple access. So these four names you have to remember. So here we are using the frequency, and then we are using the head time, then we are using the different code to separate them. बस इसमें ये तीन ही चीजें याद करनी है. इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, because examiner don't ask question from here usually in the channelization. So in FDMA what happens? So we are having a different bandwidth, and this is divided into frequencies. अलग अलग frequencies होते हैं. जैसे रेडियो होता है, रेडियो की अलग आपकी फ्रीक्वेंसी होती है. एफएम होता है, उसका अलग होता है. जो आपके टीवी के जो सिग्नल्स होते हैं, उनकी अलग फ्रीक्वेंसीज होती है. सो लाइक दिस, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी डिवीजन
multiple access. Then we are having the TDM, time division multiple access. So here we are using the slots. So हमने slots बना दिए, तो जो slots है उस slots के अंदर आपको यहाँ पे data transmit करना है. Then we are having the CDMA. So in that we are using some code. See, FDMA is different because it is not using the frequency. We are using some code. So all channel can transmit simultaneously. So we are using some coding, and because of that coding, your data is not being corrupted and it being separated. Isolation यहाँ पे रहेगा. So we can use it. So it means multiple access. What is the meaning of multiple access here? A shared medium. In a shared medium, multiple devices can transmit the data simultaneously. This is the meaning of multiple access here. Then we are having the detail that we will see later on. Now let's see some MCQ questions over here. अब एक बार अपन MCQ जो questions वगैरह है उस पर एक बार अपन देख लेते हैं. So this question asked in UGC NET 2013 September paper 2. In pre-present method CSMA protocol after sending the station, find the line ideal. Ideal इसमें मिलेगा तो हम यहाँ पे which protocol we can use here. So we can use the probability method here. So we can use 1P here. Now, which of the following multiple access protocol is being used for channel access control in Ethernet network? अभी अपन ने Ethernet नहीं देखा, but Ethernet में क्या होता है आपका wired रहता है, तो we are using CSMA CD. एक बार देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला देख लो. So we are having the CSMA CD. CSMA CD. So it is my collision detection. यहाँ क्या हो रहा है, मेरा जो collision है वो detect हो रहा है. So now we are having CSMA C. It is collision avoidance. So it used in Wi-Fi. तो जो Wi-Fi है वो होगा, और जो wired Ethernet है उसमें क्या यूज होता है, CSMA CD. तो ये क्या है, लेस एफिशिएंट इन हाई ट्रैफिक. तो आपका जब ज्यादा हो जाएगा ट्रैफिक तो एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी. Then we are having CSMC. It is more efficient when we are using the wireless communication. So usually it is half duplex and it is full duplex, and our Wi-Fi use IEEE standard of 802.11. 802.11 जो अपना स्टैंडर्ड रहता है वाईफाई का, it is being used by this. So CSMA CD, it is used for CSMA CD. अभी देखा था Ethernet जो रहता है उसके अंदर अपना यूज किया जाता है. CSMA फॉर्म क्या होता है, करियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस. B, career cell multiple access. Now CSMA CD, what happen if a collision is detection? अभी अपन ने देखा था जैसे ही मिलता है collision तो यहाँ क्या आता है, jump signal. So like this we have seen over here. Jump signals आ गया इसमें, ये वाला. Now CSMA CA is primarily used for which type of network? कौन सा नेटवर्क के लिए यूजुअली यूज किया जाता है? तो वी आर हैविंग हियर CSMA CA है. सीए है, अभी देखा था CSMA CA किसके अंदर आता है, वाईफाई के अंदर यूज किया था, वायरलेस के अंदर. तो कहाँ है वाईफाई वायरलेस.
CSMA CA is preferred over CSMA CD in wireless network because in वायरलेस डिवाइस कैन नॉट डिटेक्ट कोलिजन अर्ली इजीली इसमें नहीं रहता, तो हम सीएसएमए सीए को प्रेफर करते हैं इन अवर वायरलेस नेटवर्क। विच टेक्निक इज समटाइम यूज इन सीएसएमए सीए टू अवॉइड कोलिजन? सो रिक्वेस्ट टू क्लियर एंड सेंड यूज होता है। टीडीएम में अपना ये किसके रहता है अंदर, ये अपना कंट्रोल एक्सेस के अंदर रहता है। इसमें ये दो चीज होते हैं, रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड। आरटीएस और सीटीएस हमारा फंक्शंस यूज किए जाते हैं सीएसएमए सीए। व्हाट हैपन इफ ए डिवाइस फाइंड अ चैनल बिजी? जब उसको बिजी मिलता है तो वो क्या करता है? अभी अपन ने यहाँ पे देखा था, जब उसको बिजी मिलता है, ये देखो, when an ideal channel is found if station does not send immediately send नहीं करेगा वो। जैसे ही आपको कोई रोड दिखती है, if road is empty, it it does not mean that आप immediately रोड को क्रॉस कर लो। you are going to wait some time here to check कि कोई एकदम हाई स्पीड में व्हीकल तो नहीं है, like this, so it wait for a period, it call interframe space IFS। तो ये क्या रहता है, एक रैंडम टाइम रहेगा, आप इस तक वेट करोगे, देन यू आर गोइंग टू सी, देन यू आर गोइंग टू और यू ट्रांसमिट द डेटा। तो इट वेट्स फॉर द रैंडम टाइम बैक ऑफ पीरियड बिफोर रिट्राइंग। तो क्या करेगा, वेट करेगा ये। आई ट्रिपल स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, अभी वी हैव सीन 802.11, ऑप्शन सी। नाउ दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन यूजीसी नेट, in the P president, so we have discussed one president, N president, and P president. So after ideal, तो यहाँ क्या करें, we are using the probability here. So 1 minus P, we are going to use the probability. It's n with the probability of P. नहीं यार, एक second. In P president CSMA station finds the line ideal. It send immediately, no, it wait for no. It send with the probability P, नहीं, it send with the probability D होना चाहिए। अच्छा, ओके। So if it doesn't transmit with a probability of 1 minus p, it waits for the acha, for the next slots. Okay, okay. For the next slots, if we ask for the next slot, then we are using this. And for the data transmitting, we are using the only probability. Next slot जो रहेगा, जो आप next निकालोगे, अगर फिर से busy मिलता है channel, in that case you are using 1 minus p probability. Which of the following multiple access protocol used for the channel control access in Ethernet? Ethernet में देखा CSM में CD यूज होता है। Then we are having which of the following protocol used to avoid a collision in wireless net? Wireless net में क्या रहेगा, CSM में CA रहेगा। Then which of the following multiple access protocol used for channel across control in Ethernet network? Ethernet में क्या रहेगा, CSM में CD। And then which of the following access method used in distributed coordinator function DEF sublayer of 102.802.11? With this question asking UGC NET 2014, so we are using here CSMA CA. It is used for wireless. Then networking in CSMA, the probability of the collision exists because of why? Because of the delay. Because of the delay. So let's suppose your station is here and there is another station which is over here, and the distance is, let's suppose, 1000 किलोमीटर। इतना आपका डिस्टेंस है यहाँ के अंदर, एम के अंदर, किलोमीटर। नाउ लेट्स सपोज देयर इज अनदर स्टेशन ओवर हियर। नाउ दिस इज ए एंड लेट्स सपोज दिस इज बी एंड दिस इज, लेट्स सपोज, एक्स। नाउ लेट्स सपोज यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू बी, नाउ यू आर गोइंग टू रिसीव एक्नॉलेजमेंट आल्सो। फिर आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी आएगा, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ठीक है। अब इसके बीच में जो दूसरा है, हो सकता है कि इसने भी कुछ डेटा भेज दिया हो, इट कैन क्रिएट a collision. तो दिस इज नोन एज प्रोपोगेशन डिले। इसको क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन डिले। डेटा जाएगा, डेटा आएगा, जिसको क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन डिले। तो कॉलिजन कैसे होगा, एक बार दोबारा बताना। कोलिजन देखो, उसमें होता है क्या है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल रहता है आपका ना।
जैसा आपने ये ले लिया बस, आपको पता है ना बस टोपोलॉजी। जैसे यस। ये आप एक लाइन है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे आप बैठे हो, ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, और यहाँ पे डी बैठा है। लेट सपोज ए से डी की जो डिस्टेंस है, लेट सपोज इट इज 1000 किलोमीटर। नाउ ए वांट टू सेंड अ मैसेज टू डी। क्या करेगा, इस मैसेज को इस लाइन के ऊपर ड्रॉप करेगा। फिर ये मैसेज आगे जाएगा, 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 इसको रिसीव हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इसको अक्नॉलेजमेंट देगा। अक्नॉलेजमेंट आएगा, अक्नॉलेजमेंट आएगा, अक्नॉलेजमेंट आएगा, इसको वापस अक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। अक्नॉलेजमेंट मिल गया, सो दिस मीन्स डेटा इज बीन सेंट सक्सेसफुली and the recipient has received the data successfully. So this delay, data गया, data response है, इसको क्या कहते हैं, propagation delay. Okay, now about the collision. This was the ideal case. So let's suppose again you want to transmit the data. सर आपका मन किया मैं एक और डेटा भेजना चाहता हूँ टू डी अगेन। फिर से आपने डेटा लोड किया, डेटा गया, डेटा गया, डेटा गया, डेटा जा रहा है। नाउ let's suppose after t second this c decided, hey I also want to send a message to b। मुझे जो मेरा दोस्त b है उसको कुछ भेजना है, I want to send a message। so c also load his data। इसने भी अपना डेटा को लोड कर दिया, मुझे b को मैसेज भेजना है। अब इसका भी जो डेटा ये इधर जाएगा, इसका भी डेटा इधर जाएगा, और आपका भी डेटा आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, देयर इज अ कोलिजन डिटेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी आप जिसमें इसमें जो सिग्नल भेज रहे हो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो देर विल बी अ कोलिजन। व्हाई? बिकॉज एट ए टाइम सिंगल वे के अंदर डेटा जा सकता है, सो वी आर यूजिंग ओमनी डायरेक्शन। एट ए टाइम एक ही डेटा एक साइड में जाएगा, सो शेड मीडियम है, सो क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन डिटेक्टेड हो जाएगा। ऐसे आपका यहाँ पे कोलिजन होता है क्योंकि शेड मीडियम है, यहाँ अलग अलग वे नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक हियर फोन लाइन, ठीक है। तो जैसे शुरू में आप किसी को लैंडलाइन से कभी आप फोन लगाते हो, तो उसमें होता क्या है, वो ट्रून 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 होता है, फिर रिंग हो जाता है, बट बीच बीच में कभी आपने सुना होगा किसी और की भी आवाज आपको आने लग जाती है। आप किसी को फोन लगाते हो, उसमें भी कभी कभी हो जाता है, बहुत रेयर होता है, बट समटाइम इट ऑल्सो हैपन कि जिसको फोन लगाना है उसके साथ साथ किसी और की भी आवाज दे रही है आपको उसमें। तो वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोलिजन हो जा रहा है, इसकी वजह से किसी और की आवाज आपको भी सुनाई दे रही है। देन नेक्स्ट वी आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनलाइज प्रोटोकॉल। कौन सा चैनलाइज प्रोटोकॉल नहीं है? हमने देखा सर, एफडीएम में होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीएसएमए सीडी इज ए पार्ट ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये जो इमेज थी, इस इमेज में ये सीएसएमए किसमें, रैंडम एक्सेस के अंदर है। और जो जनरलाइज प्रोटोकॉल में सिर्फ तीन ही प्रोटोकॉल, लाइक दिस एग्जामिनर कैन आस्क ए क्वेश्चन। Then which of the following multiple access technique is used in 2G GSM network? 2G GSM में कौन सी यूज किया जाता है? उस टाइम हम यूज करते थे टीडीएम में, इसका इतना मेरे को आइडिया नहीं है। तो मूविंग अहेड, इसरो के अंदर है इन एफडीए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ईच यूजर एलोकेटेड। क्या मिलता है इसमें? अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड मिलता है। जैसे आप रेडियो यूज कर रहे हो, एफएम यूज कर रहे हो, उसमें वी आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड एंड इट इज बीइंग अलॉटेड टू इट। सो लेट्स सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ एफएम स्टेटस, मुझे यहाँ पे एफएम स्टार्ट करना है, कोई एफएम स्टार्ट करना है। सो यू आर गोइंग टू अलोकेट सम आईपी, जैसे आपको दे दिया 98.7 कि भैया ये आपकी है रेंज फ्रीक्वेंसी, इसी पे आपको अपना जो है चैनल उसको रन करना है। फिर आपका कोई फ्रेंड है, उसने कहा मुझे भी एफएम स्टार्ट करना है, आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट एफएम। फिर इसको भी ये कहे चलो आपको भी एफएम रेज करना है, तो आप यहाँ पे कर लो 101.1, ये आपको रेंज दे दी, आप इस पे कर दोगे।
अब जब आप एफएम का जो सिग्नल है अगर आप इसको बीच में लेके आओगे 99 पॉइंट का भी, तो आप यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नॉइस मिलेगा। इसके भी सिग्नल कुछ मिलेंगे, इसके सिग्नल भी कुछ मिलेंगे, सो इट कैन क्रिएट ए, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द सेपरेट रेंज बिटवीन देयर एंड देयर इज अ फ्रीक्वेंसी बैंड व्हिच इज अलोकेटेड। एफएम की अलग रहेगी, रेडियो वेव्स की अलग रहती हैं, जो जो टीवी सिग्नल है उसकी अलग रहेगी, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। देन विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज इन 4G, 4G के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? इन 2G, 2G में हमने देखा था टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज किया जा रहा है इन अवर जीएसएम नेटवर्क। नाउ वी आर हैविंग द 4G, इसका भी मेरे को इतना आइडिया नहीं है। इन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक 4G LET नेट लाइट नेटवर्क, so we are using है ODFM में, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। Then we are having which of the following statement is true about CDMA? CDMA regarding कौन सा true है? So in that CDMA we are having the unique code. Code का यहाँ पे each user is assigned with the unique code. Now which of the following is the control access protocol? Control कौन सा? अलोहा नहीं, random है, CSMA random है, टोकन पासिंग यस आपका, ये आपका किसके अंदर है? कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर आता है। इसमें रिजर्वेशन आता है आपका, मेथड एक और आता है, पोलिंग आता है और टोकन पासिंग, तीन मेथड आते हैं। पोलिंग एक्सेस मेथड, हाउ डज द प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल द कम्युनिकेशन, कैसे यहाँ पे कंट्रोल करेगा? तो जो जो प्राइमरी डिवाइस है वो कैसे काम करता है? वो जो सेकेंडरी डिवाइस है उनको बोलेगा, by allowing any device to send randomly no, continuously broadcast no, inviting yes, it is going to use two method, दो मेथड देखे थे हमने, poll and select, we have seen the two method over here, poll and select, ये दो मेथड यूज होते हैं, पोल फंक्शन एंड सेलेक्ट फंक्शन। सो इट टेल द सेकेंडरी डिवाइस, तो सेकेंडरी डिवाइस क्या करेगा, टेल करेगा, नाउ यू आर गोइंग टू सेंड द डेटा, नाउ यू आर गोइंग टू रिसीव द डेटा लाइक दिस। Now token ring is the example of which control access protocol? So token ring क्या रहता है? Control access का रिस्ट रहता है। Which of the following access protocol use IEEE is 802? So 802 ये किसका रहता है? आपका बेसिकली इथरनेट का रहता है। 802 के बाद जो 3 4 5 रहता है, सो आपको IEEE स्टैंडर्ड से याद करना। समटाइम दे आस्क एग्जाम आल्सो इन 5 वी आर यूजिंग टोकन रिंग, किसमें क्या है? टोकन पासिंग के अंदर आ जाएगा ये। Which of the following is not a control access protocol? कौन सा कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल नहीं है? CSMA, CSMA नहीं है, ये पोलिंग कंट्रोल है, रिजर्वेशन कंट्रोल है, ये CSMA किसका है? ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल मेथड है। So these are the few questions we have seen about this. Okay. So in next class we are going to see next topic.